हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इक्विटी माइंड्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइंड स्पेस राइट आईपीओ की, जो ओपन हो गया आज 27 जुलाई। सो क्या करेंगे इसमें, हमें बाय करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीप है, ओवर वैल्यूड है, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीओ डिटेल्स दैट आज से ओपन हो गया 27 जुलाई से 29 जुलाई तक ओपन रहेगा, राइट, 3 डेज। एंड द इशू साइज इज 4500 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू 1000 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल 3500 करोड़। एंड आईपीओ प्राइस रहेगा 274 to 275। मार्केट लॉट इज 200 शेयर्स एंड गोइंग टू लिस्ट एट BSE NSE। मार्केट कैप एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग वुड बी 23,675 करोड़ and IPO shares listing date would be 12th August, right? This 12th August. And minimum lot size is 200 shares that you need to invest 55,000 at one go. It's not like other normal IPOs जिसमें आपको 14-15,000 में 13-14,000 में आपको lot मिल जाता है 13-14 shares का. So who are the promoters? Promoters are basically K. Raheja and Blackstone, and Blackstone holds 15% of the shares, right? And promoter shareholding will come down from 85% to 65% post IPO. एंड अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो 1125 करोड़ ऑलरेडी मिल चुका है कंपनी को, लाइक GIC, फिडेलिटी, दीज इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स, राइट। तो क्विकली देख लेते हैं राइट क्या होता है। राइट इज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं जहां पर मनी पूल की जाती है और इन्वेस्ट की जाती है कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट्स में। एंड REIT अर्न्स रेंटल इनकम फ्रॉम देयर प्रॉपर्टीज, जो यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। सो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स, गोल्ड्स, बॉन्ड्स में। हाउएवर द अंडरलाइंग एसेट्स इन राइट्स गेट्स इन्वेस्टेड इन एक्चुअल फिजिकल रियल एस्टेट कमर्शियल प्रॉपर्टीज में। सो exactly similar to a mutual fund, right too will have a sponsor which establish a trust, right? And how exactly it works, right, like a mutual fund collects money from investors, पैसा लेते हैं इन्वेस्टर से, then वो इन्वेस्ट करते हैं across rent generating properties, and after investing they earn rental income, and then they distribute rental income to their investors via periodical dividends, right? And what is the regulation? Regulation says that these rights have to pay out 90% of their distributable cash flows to the unit holders. And rights are supposed to have minimum 80% investments in completed and income generating real estate properties, right? So we discussed that 1000 crore is for fresh issue, right? And 3500 crores are offer for sale. So कितना पैसा ये कंपनी को मिलेगा, लाइक फॉर देयर बिजनेस पर्पस। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस फ्रेश इशू ही जाता है कंपनी के पास, बाकी जो होता है वो प्रमोटर जो अपना होल्डिंग कम कर रहा होता है उनके पास चला जाता है, बट नॉट इन दिस केस। हाउ वी विल सी, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अगेन फ्रॉम देयर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सो इट सेज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल they are saying Mindspace right will not receive any proceeds from the offer for sale, and the proceeds received from such offer for sale will not form part of net proceeds. But what that at June 30th इनका कुछ SPVs बने हैं जो अलग अलग कंपनीज चला रहे हैं, प्रॉपर्टी उनके नाम पर आती है, दे अर्न रेंटल इनकम, राइट। सो हो क्या रहा है यहाँ पर, almost 2,753 crore rupees was outstanding to certain assets SPVs from K. Raheja group entities. So K. Raheja ने कुछ SPVs को कितना पैसा देना है, क्योंकि कंपनी ने लोन दिए हुए हैं K. Raheja के एंटिटीज को। एंड द मैनेजर एंड द KRC सेलिंग यूनिट होल्डर्स pursuant to their letter to SEBI and book running lead managers have undertaken that they shall not proceed with the completion of the offer if such outstanding dues to such SPVs cannot be repaid from the proceeds of offer for sale. So the conclusion is जो पैसा आएगा 3500 करोड़ उसमें से कंपनी को, माइंडस्पेस को पूरी लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी, जो कि 2753 करोड़ थी। बट ऑन जुलाई 14 को कुछ ऑलरेडी अमाउंट पे कर दिया, 1350 करोड़ एंड 340 करोड़ ऑलरेडी पे कर दिया। सो आउटस्टैंडिंग एज ऑन जुलाई 15 इज 1379 करोड़, तो ये भी पे करना पड़ेगा।
So almost this 1379 crores भी मिलेगा कंपनी को from offers for sale, right? So what are the positives? So positive is company owns a quality office portfolio. So located in 4 key office markets of India, and its portfolio has total leasable area of 29 million square feet. और it is one of the largest grade A office portfolios in India. और जो 29.5 million square feet है, इसमें से 23 is completed area, 2.8 is under construction, and 3.6 is future development area, right? And second good positive thing is stable cash flows with contracted occupancy and escalations. So they have diversified and quality tenant base. So what we saw in their red herring prospectus, जो इनका 85%, it's a major chunk of the gross revenue, right? So ये आता है MNCs से, and out of 39% is attributable to future Fortune 500 companies such as Accenture, Facebook, Qualcomm, Amazon, right? यहाँ पर MNC word छूट गया है. So in terms of gross contracted rental as of March 31st, approximately 85% of the revenue comes from MNCs, right? And third good thing is their escalation clause earlier was 12% to 15% every 3 years, but now they are starting incorporated this clause 4 to 5% every year. So हर साल इनका revenue growth आएगा. Fourth point is their flexible capital structure for inorganic growth. So जैसे हमने बात करी, इनका total indebtedness जो अभी है वो March 31st 2020 was 7,382 crores, and they expecting it to reduce to 3,600 crores post IPO. And fifth good thing is like this is in all the rights embassy also. So stable dividend yield and capital appreciation in the form of share price increase as per market conditions, right? And चलिए negatives की बात कर लेते हैं. Negatives में जो सबसे major negative है, which is written in their red herring prospectus also, that they'll not be may not be able to make distribution to the unit holders in the manner described in the offer documents, and the quantum of distribution may decrease. So because this second point, amid ongoing COVID-19 pandemic, this sector is facing challenges due to work from home model. So what their projections are might not may not get true because they are because of all these challenges. Second is demand may reduce in near future due to this, right? Renegotiating of existing contracts at lower rates. So जो tenants होते हैं, they may be in a better condition to renegotiate जब पूरा occupancy नहीं होगा landlord के पास. तो third negative is concentration risk. So in concentration, first point is tenant concentration. So their 10 largest tenants accounts for 41% of their gross contracted rentals and 40% of their occupied area. So it's huge. So top 10 clients, right? And sector concentration also, their tenants in the technology industry accounts for approximately 45% of their gross contracted rentals and 50% of occupied area. So IT companies को majorly इनका जो area है वो let out है, and IT companies में अभी जो work from home model चल रहा है, and they are TCS is also saying that they are going to this deploy work from home model totally. So इससे future challenges ज़रूर दिख रहे हैं इस sector के लिए. And fourth one is contingent liabilities related to legal proceedings. So when we were going through the red herring prospectus, हमें 338 crores के भी मिले. It includes legal title claims, proceedings, tax proceedings, and all those legal proceedings on account of that. And fifth one is lot of related party transactions and complex structure of right. So when we were going through the structure of this company, so हमें क्या दिखा, इसमें काफ़ी सारी related party transactions हैं, lot of loans to SPVs and SPVs पे बैक कर रही है, काफ़ी सारी huge transactions. So it's a very complex, cumbersome structure to understand. So these all are negatives.
So this is again from net earning prospectus. This litigations liabilities 200 crores approx. This claims on account of this Sovitex income tax for 140 crore. चलिए फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं. सो जैसे कि हम देख पा रहे हैं टोटल रेवेन्यू इज ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड. लास्ट ईयर इट वाज 2026 करोर्स एंड पैट वाज same as of financial year 19 514 crore. So why it was not increased? Because एक तो इंटरेस्ट बढ़ गया था 80 करोड़ से और एक कॉस्ट ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स 200 करोड़ से बढ़ गया था. सो इट वाज नॉट मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन दैट. क्यों बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या है, राइट? एंड व्हाट ब्लूमबर्ग एस्टिमेट्स आर सेइंग, लास्ट ईयर का इसका डिविडेंड यील्ड 3.5% था, विच इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज टू 7.5% फॉर 21 फाइनेंशियल ईयर. एंड जो इसका पीयर एम्बेसी राइट उसका भी डिविडेंड यील्ड अप्रॉक्स इतना ही है. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं. फॉर like we can see in last year 2020 their cash generated was 926 crores and net increase in cash and cash equivalent was 45 crores despite financing most of the cash. अगर financing activity हम देखें, so मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है, just summary point. What I want to highlight that their cash and cash equivalent at the beginning of the year was 111 crore negative and at the end of the year also 66 crore negative. So they are need for desperate fund infusion. So in last 3 years we can see their cash and cash equivalents was negative. So it is being financed from bank overdraft. We can see in the second and last line. Valuations की बात कर लेते हैं. सो जो माइंड स्पेस का NAV है दैट इज़ 275 रुपीज़ और प्राइस टू बुक हो गया 0.86 टाइम्स, राइट? और जो इसका एम्बेसी ऑफिस पार्क का जो NAV है दैट इज़ 375 रुपीज़ एंड डिस्काउंट टू NAV इज 6%. सो जो डिस्काउंट टू NAV है माइंड स्पेस का दैट इज़ 14% और इसका 6%. सो जो डिस्काउंट टू पीयर हुआ, जो ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है माइंड स्पेस का, वो दैट इज़ कम्स टू 8% एंड इन वैल्यू टर्म्स 22 रुपीज़. So this 22 rupees we can see at the time of listing gains or after short period, but I would say this is only in hindsight comparison on paper, because a lot of things do matter for the IPO, which we will see in the conclusion. So the conclusion is the IPO is almost fully priced and good for those who requires consistent dividend income over a period of time, right? And third one is we can expect nominal price increase as per market conditions, and that too in the current COVID times, not expecting much. And fourth one is all valuations done was on 31st March 2020 basis, and after COVID property price might have reduced in their key markets of Mumbai, Pune, Hyderabad, Chennai, right? So जो fair value है ये March 2020 का है. So the conclusion is only cash surplus risk heavy investor may consider it for a long term purpose at your own risk. And disclaimer is I'm not going to apply for this. Thanks for watching guys. Do like and subscribe. Thanks.